हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी स्टूडेंट्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आ रहे हैं उसका नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। एज यू नो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ एंड वेरियस यूजेज ऑफ केमिस्ट्री आर फॉलोइंग इन डिफरेंट फील्ड्स। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है मॉर्निंग से जब अपन उठते हैं और इवनिंग लेट नाइट तक जब अपन सोते हैं तो विदाउट केमिस्ट्री अपन जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा वर्क है जिसपे केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन होता है। आसपास अगर हमारे एनवायरनमेंट में भी देखते हैं तो हम केमिस्ट्री को ही देख पाते हैं। मॉर्निंग में जैसे आप उठेंगे तो आप फ्रेश एयर ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन है, वो भी एक केमिकल ही है। आप जो वाटर यूज कर रहे हैं वो भी एक केमिकल ही है। और जो भी आप जैसे चाय पीते हैं मॉर्निंग टाइम में तो वो एक केमिकल प्रिपेयर्ड मटेरियल है। स्टूडेंट्स, अगर आप देखते हैं तो डेली एक्टिविटी में जो भी वर्किंग करते हैं, जैसे सपोज करें कोई जेली है, जैम है, इधर से कोई भी टाइप्स के मार्केट से में बनी हुई कोई भी वेजिटेबल्स है, या फिर हम कोई कहे कि कोई भी स्वीट्स है, आजकल उनमें केमिकल्स का ज़्यादा यूज किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसमें केमिस्ट्री का एप्लीकेशन नहीं है। सो दैट गाइज वी स्टार्ट्स मोस्ट वेल इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस in different fields. Students, these are followings. Write down, students. First, in the field of agriculture, as you know, students, improvements of seeds used to fertilizer kill many insects during crops used pesticides and insecticides. These are chemicals. So that students, fertilizers, pesticides and insecticides are chemicals used in the field of agriculture. Okay students. In food materials, students, you know very well, in modern times many types foods are prepared and packed one place to another place. Therefore, as a preservatives and formations of many jam jelly used many chemicals. Okay students. And third application and third importance of chemistry in the field of medicine and health, students, is a vast area, and without chemicals it is not important health sector. You know students, treatment and diagnosis of a particular disease used chemicals, and medicine is a vast department and large departments of chemicals. Many diseased like as cholera, smallpox, dengue, and many types fevers use different type chemicals. But you know very well students, those disease which cannot be curable by any treatment, but some medicines is used for the treatment of like as dangerous disease, AIDS and cancer. In AIDS medicine used AZT, azithromycin is very important drugs.
same as for curing of cancer, cisplatin is mostly used. Cisplatin is mostly used chemicals, and cobalt 6 therapy used for treatment of cancer. Cobalt 6 therapy, it means radiotherapy used for treatment of cancer, and chemotherapy used for treatment of cancer. These are health sector, students. So that we can say that medicine play very important role in health sector. Students, next use, mostly used in industrial field. Many chemicals, soap and detergents product in industry. Many industry used and product forms like concentrated H2SO4, concentrated HNO3, concentrated HCl. These are chemicals used for laboratory purpose and industrial purpose. So that we can say that in industrial field, chemistry play very important role. Okay, students. Next field, instance in the field of biology. Many chemicals used in living things for different purpose, like radioactive phosphorus. Radioactive phosphorus is used in plants for movement of food. For movement of food from leaves to root. Therefore, radioactive phosphorus, it means it is a chemical. Then this chemical used for check the movement of food from leaves to root. Students, next in the field of war, you know very well, students. In the war technology generally used some explosive substances like as dynamite, like as trinitrotoluene, like as hydrogen bomb, like as tear gas. Many gases used in form of war gases. These are all chemicals, friends. So that chemicals can be explosive and chemicals may be life secure, life saver. Next, other usage of chemistry, other usage of chemicals like as in the form of fuel. Students, we know that petroleum industry, all fuels like as petrol, diesel, kerosene. Okay. Next usage in the purification of metals and alloys. Some chemicals used for purification of metals and alloys. Next, in the synthesis of some specific materials, कुछ स्पेसिफिक मटेरियल्स के सिंथेसिस के लिए भी केमिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है. एंड इन प्यूरिफाइंग एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट को हम प्यूरिफाई करना चाहते हैं तो हम किसी न किसी का, याद करिए, हम किसी किसी का छिड़काव करते रहते हैं, है ना. जैसे कभी जैसे एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो जाता है तो उस पोल्यूटेड एनवायरमेंट को क्या नाम से क्लीन करने के लिए वापस से हम कोई कोई केमिकल्स का क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं. उससे क्या होता है, वो जो भी पोल्यूटेंट है उसका लेवल क्या हो जाता है, उसकी जो कंसेंट्रेशन है उसको क्या कर देते हैं, डाउन कर देते हैं. तो स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री का मीन्स होता है जो भी फील्ड्स होते हैं उन सब में केमिस्ट्री का यूज होता है. यू नो स्टूडेंट्स, ब्यूटी पार्लर में केमिस्ट्री का रोल होता है. तो डिफरेंट ऐसे सेक्टर्स होते हैं जिसमें केमिस्ट्री वेरी यूजफुल होती है. तो स्टूडेंट्स, एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसको अपन को ऐसे कैसे लिख लेना है. ओके गाइज, चलिए. तो स्टूडेंट्स, आप टॉपिक लिखे इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, और आप जब टॉपिक लिख लें तो इसके साथ एक लाइन लिखिए, केमिस्ट्री प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ. There are many fields used of chemistry. These are following.
स्टूडेंट्स ये लाइन लिखने के बाद में आपको फर्स्ट टॉपिक लिखना है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसमें आपको लिखना है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स यूज्ड एज ए इम्प्रूव सीड्स and pesticides and insecticide used as a terminator of insect and weedicide, but second लिखना in food materials some chemicals used as a preservative of food materials like a sorbic acid and sodium benzoate. It preserved jam, jelly, pickles, etc. नेक्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। थर्ड पॉइंट बच्चों, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड हेल्थ। इसमें आप लिखिए स्टूडेंट्स इन द हेल्थ सेक्टर केमिस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, केमिस्ट्री प्ले very important role. It is used in diagnosis and treatment of many disease. In next line, mostly medicines are chemicals, which is used as a curable agent for disease like as smallpox, cholera, dengue, typhoid, pneumonia, etc. Next line, many uncurable disease treated by many medicines like AZT in bracket azidothymidine used in treatment of AIDS and cisplatin used in treatment of cancer. In next line, cobalt 60 radiation used in treatment of cancer and chemotherapy is play very important role in ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों देखिए नेक्स्ट है फोर्थ नंबर, डाल लीजिए टॉपिक इन इंडस्ट्रियल फील्ड। फोर्थ नंबर डाले बच्चों इन इंडस्ट्रियल फील्ड। तो बच्चों लिखिए केमिस्ट्री इन दिस फील्ड having following application, नंबर 1, इसमें भी बच्चों नंबर 1 लिखना इन बिल्डिंग मटेरियल्स लाइक ए सीमेंट, लाइमस्टोन, आयरन,
एस्बेस्टोस, एस्बेस्टोस एसेट्रा। सेकंड लिखना बच्चों इन फैब्रिक इंडस्ट्री, इन फैब्रिक, बच्चों आपको पता है अलग अलग इंडस्ट्री होती है, तो आप इंडस्ट्री का मैटेरियल लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट लिखिए इन फैब्रिक इंडस्ट्री, इन फैब्रिक इंडस्ट्री एग्जांपल लिखिए रेयोन, रेयोन, टेरिलीन एंड नाइलोन, ये बनते हैं बच्चों इसमें फैब्रिक इंडस्ट्री में। रेयोन RAYON, टेरिलीन TERYLENE, टेरिलीन एंड नाइलोन NYLON। नेक्स्ट लिखना बच्चों थर्ड इन द फील्ड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक्स, बच्चों आप सबको पता है ग्लास एंड प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है, तो इन द फील्ड ऑफ ग्लास एंड प्लास्टिक। और फोर लिख लेना इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, क्या लिखेंगे बच्चों फोर इन कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट लिखना स्टूडेंट्स इन द फील्ड ऑफ वॉर, मैं इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी लिखे पहले, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी, इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। इसमें आप लिखना है स्टूडेंट्स रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इज यूज्ड to study the movement of food, to study the movement of food in plant from root to stem, in plant from root to stem or leaf। अब बच्चे लिखिए नेक्स्ट इन द फील्ड ऑफ वॉर, इन द फील्ड ऑफ वॉर, इन द फील्ड ऑफ वॉर। इसमें लिखना स्टूडेंट्स a number of explosives, a number of explosives used in war like trinitrotoluene TNT, trinitrotoluene TNT, dynamite DYNAMITE, dynamite, nitroglycerin, nitroglycerin NITROGLYCERINE, nitroglycerin, hydrogen bomb, tear gases etc। नेक्स्ट लिखते हैं स्टूडेंट्स अदर यूजेज ऑफ केमिस्ट्री, अदर यूजेज ऑफ केमिस्ट्री। अब बच्चों आपको केमिस्ट्री के अदर यूजेज में लिखना है फर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल, फर्स्ट लिखो बच्चों इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल। सेकंड लिखिए इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड एलॉयज। थर्ड लिखना इन द सिंथेसिस ऑफ सम स्पेसिफिक मटेरियल्स। और फोर्थ लिखेंगे इन प्यूरिफाइंग एनवायरमेंट। तो बच्चों देखिए ये एक ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिनको कोई भी बच्चा लर्न कर सकता है, बेसिक नॉलेज है, इसमें कोई दिमाग लगाने वाला कोई भी केस ऐसा नहीं है। इसमें केवल आपको लिखना है कि भाई ऐसे ऐसे यूज होते हैं, ये इंपॉर्टेंस होती है केमिस्ट्री की। यू मान के चलिए अभी तक जो मैंने आपको समझाया है इस लेसन में जो स्टार्टिंग होती है लेसन का मीनिंग समझाया है, बाकी और आपको कुछ भी मैंने नहीं समझाया स्टूडेंट्स। लेकिन अब टॉपिक ऐसे आएंगे जो स्टेप टू स्टेप कनेक्ट होंगे, स्टेप टू स्टेप कनेक्ट होंगे। चलिए तो हम बिना समय गंवाए उस टॉपिक की आपसे चर्चा कर लेते हैं बच्चों। तो देखिए उस टॉपिक का नाम है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बच्चों पहली बात तो अगर हमसे कोई पूछे कि व्हाट इज मैटर, स्टूडेंट्स ऑल थिंग्स कैन बी सेड टू मैटर which can occupy space and materials have mass।
आर कॉल्ड एज मैटर। बच्चों, आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी थिंग्स को मैटर कब कह सकते हो? एक तो जैसे मैं कहूं कि ये पेन जो है एक मैटर है, मैं भी एक मैटर हूं, आप लोग भी सब मैटर हो, एयर भी क्या है? मैटर है। क्यों है ये मैटर? वाई टू बी कोल्ड ऑल सब्सटेंसेज कोल्ड मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस, विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मास भी होना चाहिए और उसका वॉल्यूम भी होना चाहिए, तब आप उसको क्या कह दोगे बच्चों? मैटर कह दोगे। तो कोई भी पेन है, कोई भी टेबल है, कोई भी चेयर है, कोई बुक है, ऑल थिंग्स आर मैटर। ओके स्टूडेंट्स, मैटर को अगर हम फिजिकली और केमिकली क्लासिफाइड करें तो मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन जो होता है वो होता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। यानी कि मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में होता है। लेकिन स्टूडेंट्स, केमिकली जो मैटर को क्लासिफाई किया जाएगा स्टूडेंट्स, केमिकली क्लासिफाइड मैटर इन फॉलोइंग टू फॉर्म्स। एक तो होता है बच्चों प्योर सब्सटेंस और एक होता है मिक्सचर। इट मीन्स मैटर classified into following two categories, pure substance and mixture। देखिए बच्चों, जो प्योर सब्सटेंस होता है उसको भी हम टू टाइप से डिवाइड करते हैं। एक हम डिवाइड करते हैं एलिमेंट्स में और एक हम डिवाइड करते हैं कंपाउंड्स में। एंड एलिमेंट्स फर्दर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। Elements further classified in following three categories। स्टूडेंट्स, उनके नेम्स आप सभी को पता होने चाहिए। मेटल, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल, ऐसे इनका क्लासिफिकेशन होता है। और बच्चों, जो कंपाउंड्स होता है उसको कैसे क्लासिफाइड किया है? कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में क्लासिफाई करते हैं। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में क्लासिफाइड करते हैं। और जो मिक्सचर होता है स्टूडेंट्स, इसको टू टाइप से डिवाइड किया गया है। एक होमोजेनस, एक सेकंड है हेट्रोजेनस। होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन मैटर और बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखिए। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड occupies space, that has mass and occupy space। Everything around us is made up of matter। Everything around us is made up of matter। बच्चों, ये मैटर की आपकी क्या होगी? डेफिनेशन हो गई। अब आप सबको पता है स्टेट्स ऑफ मैटर मोस्टली क्या होती है? फिजिकली थ्री टाइप से डिवाइड की गई है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। तो बच्चों टॉपिक डालिए स्टेट्स ऑफ मैटर। Write down students, states of matter। There are three physical states of matter। There are three physical states of matter। It means